This is one of the very common asked interview question. Swap the number. Not only for the freshers but for the experience also. The way they ask is different. But they are asking for swapping the number in JavaScript. So एक तो हमारे पास तरीका होता है ट्रेडिशनल वे where we can swap. Another way होता है जिसमें हम restructuring करते हैं और sometime we have to swap for the objects also. So let's start with the traditional way. Suppose we are having a variable like a is equals to 10 where b is equals to 20. It will not be the semicolon, it will be a comma only. हमने एक तीसरा वेरिएबल भी क्रिएट किया है temp के नाम से where we are storing a inside into the temp and फिर a is equals to b and b is equals to temp. तो यहाँ पे हमने दो वेरिएबल लिया है a एंड b विच हैज टू बी स्वैप्ड. उसके लिए हमने थर्ड वेरिएबल क्रिएट किया है जिसको हम टेम्प बोल रहे हैं और हमने a की वैल्यू टेम्प के अंदर डाला. उसके बाद b की वैल्यू को a में डाला और फिर टेम्प की वैल्यू को हमने b में डाला. अगर हम इसको कंसोल करेंगे console डॉट लॉग आई विल सिंपली कंसोल a कॉमा b यू विल सी दैट a और b की वैल्यू स्वैप हो रखी है. See 20 and 10. But this is the traditional way. But if I have to, if the interviewer will ask like swap the value without using the third variable it means you need not to use temp a here. Then in that case what you will do? In that case you have to use the destructuring method here. So how you will do? So you have to destructure it. How we can do it? We can do it like this. Means a or b के स्ट्रक्चर को हमने स्वैप किया बी और ए में और फिर हमने ए और बी को कंसोल करा दिया. सी दिस इज वेरी इजी. 20 एंड 10. नाउ अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है नॉट विद द फ्रेशर्स बट फॉर द अपर लेवल और मेक द स्वैप लिटिल बिट कॉम्प्लेक्स कि अगर आपको ऑब्जेक्ट को स्वैप करना हाउ वी विल डू यू नीड टू थिंक अबाउट इट. So let's do it. We'll do it. It is very easy and very similar to this where I'll change the value with, I'll create two object. Object 1 is equals to, I'll keep name here with Savi. Take a name, for example Savi here. Take another object like object 2 here. I'll make a another object 2 where I'll take suppose Ram. Okay, so how we will swap this? Simply as we swapped as the destructuring method we'll use here also. So object 1 and object 2 has to be swapped with object 1 has to be swapped with object 2 and object 2 has to be swapped with object 1. And when we'll display this one, we'll console it dot name because it is an object, so you have to take the specific thing which you have to display. So I am having name here, so object dot name will come here. Object 2 dot name. Okay, so let's see Ram and Savi. So object 1 having Ram here and object 2 having Savi here. अगर ऐसा और क्वेश्चंस आपके पास आता है यू कैन इजीली रिजॉल्व दिस क्वेश्चन. फॉर मोर output based interview questions please follow this channel. Thank you.